थोड़ा वेट कर लेते हैं ताकि सभी लोग ज्वाइन कर लें, देन विल कंटिन्यू। सो उम्मीद करते हैं आप सबका बाजार बहुत अच्छा चल रहा होगा। और अब हम जो टेक्नोलॉजीज यूज कर रहे हैं, लाइक एआई, मशीन लर्निंग, जो कि अब हमारी हेल्प कर सकता है मार्केट्स के लिए प्रेडिक्शन देने में। सो उसी से रिलेटेड ये मीटिंग होगी। सो एक बार अच्छे से सब लोग ज्वाइन हो जाएं, देन फिर हम कंटिन्यू करते हैं और आपको बताते हैं किस तरह एआई हमारी हेल्प करेगा इस मार्केट में हमें आगे बढ़ाने में, और अपनी पोजीशंस को हम किस तरह से मैनेज कर सकते हैं एआई के साथ। Good So, afternoon, Keshav. How are you? yeah, all good. Yaron sir, hi Ben, hi, Yaron sir. Hello Oh, everyone. hello. मेरे साथ यहाँ पर आज शून्य के इस वेबिनार में, शून्य एंड आइनो फर्स्ट के इस वेबिनार में मेरे साथ आइनो फर्स्ट की साइड से मिस्टर यारोन और मिस्टर बेन हैं, जो कि हमें गाइड करेंगे कि किस तरह एआई हमारी इन्वेस्टमेंट की जर्नी में, हमारी ट्रेडिंग की जर्नी में हेल्प कर सकता है, किस तरह हम एआई का यूज करके अपने 2025 की जो भी ट्रेडिंग जर्नी है, इन्वेस्टमेंट जर्नी है, उसको हम कितना फ्लेक्सिबल बना सकते हैं, कितना प्रॉफिटेबल बना सकते हैं, और एआई हमें कहाँ कहाँ पर हेल्प करेगा कि हम अपनी जर्नी को एक स्मूथ जर्नी बना सकें, और एआई की हेल्प से हम जो है अपना ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट जर्नी में बेनिफिट्स ले सकें। So, Yaron sir, over to you. Now you can start and please tell about this sign of first product to the Shirne clients and uh, to be the I know first clients. Yeah. Thank you. Thank you very much, Keshav. Hello, Ben. Hello, Yaron. How are you today? I'm good. I'm good. It's nice to see all these people in our monthly webinar. We had a really interesting webinar today. We're going to talk about the Indian markets, what happened in the last few months, and most importantly, what's going to happen in the next month. So we're going to see what the algorithm thinks about the Indian market for the beginning of 2025. And we have a lot of examples and live forecasts, so it's going to be interesting webinar today. For sure. For sure. There's several surprises, specifically at the end of this webinar. And as Ben mentioned, we are going to build a unique webinar today because we are going to talk about the upcoming year, not only about the upcoming weeks or days. We are going to talk about the trends, the opportunities that the artificial intelligence technology algorithm is identifying for the upcoming year. Maybe we should start with the disclaimer quickly. Yeah, sure. INOFIR's daily market forecast does not provide personal investment or financial advice to individuals or active personal financial, legal, or institutional investment advisors. I would really advocate to purchase or sell any of the security investment to use in this particular financial strategy. All investing stocks forecasts and investment strategy include risk of loss for some or even all of your capital. Before pursuing the financial strategies discussed on this website, you should always consult a licensed financial advisor. So this is for, please read the disclaimer as well, and we can start. Okay.
Let's start. सो सभी क्लाइंट्स जो भी हमारे शून्य यूजर्स हमारे साथ जुड़े हैं, उन्हें मैं बताना चाहूँगा कि जो हम वेबिनार कर रहे हैं ये एक आपको एक एजुकेशन पर्पस के लिए है। आपको ये कभी नहीं कहा जाता कि आप जस्ट एआई के रिकमेंड किए हुए स्टॉक्स को आप उसके ऊपर ट्रेड लीजिए, इन्वेस्टमेंट कीजिए। आप अपनी थॉरो रिसर्च कीजिए और ध्यान रखिए ये हम जिस बाजार में हैं यहाँ पर एक आर्थिक जोखिम भी संभव है। सो जो भी आप पोजीशंस लेते हैं, जो भी आप ट्रेड्स लेते हैं, इन्वेस्टमेंट्स लेते हैं, सो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि उसके ऊपर अपनी प्रॉपर रिसर्च करें, उसके बाद ही किसी ट्रेड में आप पार्टिसिपेट करें। और यारोन और बैन जो भी डिस्कशन यहाँ पर आप लोगों के साथ करेंगे उसको मैं अपनी जो हमारी भारत की भाषा, हमारी हिंदी भाषा है, उसके अंदर मैं आपको सारा एक्सप्लेन करूँगा। और उम्मीद करता हूँ कि आज के इस वेबिनार में हम कुछ सीख के जाएंगे कि किस तरह हम एआई का और अपनी रिसर्च का दोनों का ही इस्तेमाल करके हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी और इन्वेस्टमेंट के अनुभव को बेहतर कर सकते हैं। ओवर टू यू बैन। Okay, so yeah, for those of you that are not yet part of our WhatsApp group, we are strongly suggesting to join. We are going to talk about this group during this webinar as well, I think, Ben, right? Yeah. Okay, and let's start. Yeah. I would like to told people to join in this group. So जो भी peoples जो भी लोग हमारे इस वेबिनार पर हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। Ben, if you please zoom out this, so it would be helpful to scan the QR code. सो आप लोग इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर आपको वेबिनार साइन ऑफ फर्स्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशंस भी मिलती रहेंगी कि कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं, और साथ ही हम आपकी इस जर्नी में आपकी हेल्प भी कर पाएंगे आई नो फर्स्ट की साइड से। सो वी वुड रिक्वेस्ट कि आप इस ग्रुप को एक बार ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो भी अपडेट्स हों आई नो फर्स्ट से रिलेटेड वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर भी मिलती रहे। Thank you. I will start with a quick introduction about I know first, and then we're going to illustrate how to utilize the AI algorithm in the best way on a daily basis in order to identify opportunities in the Indian market. Let's start. I see a lot of people that are raising their hands. I would suggest to use the Q&A window in order to ask any questions that you might have, and we are promising to address all the questions by the end of this webinar. So I know first. I know first is an AI fintech company. Our main solution is a predictive algorithm that identifies the most promising investment opportunities on a daily basis. We are utilizing artificial intelligence, more specifically deep learning, artificial neural networks, genetic algorithms to predict the financial market. Our predictive algorithm is generating daily forecasts for over 13,500 assets, including equities, ETFs, commodities, currencies, indices with daily forecasts for multiple time frames, short-term, mid-term, and also long-term. This is a global solution. We are covering over 50 global stock exchanges, including the stock exchanges in the US, Europe, but also the stock exchanges in Asia, including India, both NSE and BSE. And if we are jumping to opportunities that the algorithm has identified today, we can see here an example of a short-term prediction and the specific opportunities that the algorithm identified today. We can see here COBEX, Cubing, California Software, as well as BGR Energy Systems,
that were highlighted by the AI algorithm as part of the small cap investment universe. This is the forecast for the 7 days time frame, right, Ben? Yes. Yes, Yes. this is the 7 days. This is Small the cap 7 days. 7 days. And this is the forecast from today, basically. Again, it's not investment advice, it's just illustration in order to illustrate how the algorithm looks like, how it's identifying the opportunities. We are going to see a lot of examples today. Don't take it as an investment advice, please. ओके सो हम बात करने वाले हैं आइनो फर्स्ट के बारे में। आइनो फर्स्ट किस तरह से काम करता है और कैसे हमारे लिए मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लेके आता है, जहां पर हम अपनी रिसर्च थोरो रिसर्च करके, एक्चुअली एआई है, अभी हम इतने एडवांस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करना थोड़ा सा हमारे लिए, क्योंकि हम लोग इंडियन मार्केट में बैठे हैं और इंडियन मार्केट्स जो हैं वो इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड चलता भी है और कई बार नहीं भी चलता है। तो इसलिए हमें क्या है कि हमारी रिसर्च ज़रूर करनी है। रिसर्च करनी किस स्टॉक्स पर है, वो स्टॉक्स हमें एआई ज़रूर बताता है, क्योंकि आप जैसे जानते हैं, अगर हम एनएससी की भी बात करें तो 1700 से ज़्यादा स्टॉक्स हैं जो कि डेली बेसिस पर ट्रेड होते हैं। और अगर हम ज़्यादा दूर की बात ना करें तो भी निफ्टी 500 जो है वो एक अच्छी ट्रेडिंग रेंज है, जहाँ पर हम लोग ट्रेड्स करते होते हैं ना, जहाँ के स्टॉक्स हम लोग ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं। सो अब अगर 500 स्टॉक भी कोई मुझसे डेली बेसिस पर एनालाइज करने के लिए बोलेगा तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। सो अब वही काम जो है एआई कर रहा है, और ये सिर्फ 500 नहीं, 1500 से ज़्यादा स्क्रिप्ट को एनालाइज करता है। 1500 से ज़्यादा स्क्रिप्ट्स को एनालाइज करके उसके अंदर जो बेस्ट अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन्हें हमारे लिए ढूंढ के देता है, और देन फिर उसके ऊपर हम अपनी रिसर्च करके जहां हमें लगता है कि यस, यहाँ पर ये एआई की तरफ से भी पॉजिटिव सिग्नल दिखा रहा है, और मुझे भी लग रहा है कि ये वाला ट्रेड, चाहे वो बाय साइड का देखें या फिर वो सेल साइड का देखें, व्हाटएवर, वो आपकी कॉल है, बट आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। उसके वो एक आपको बेस बना के दे सकता है कि हमने अपनी रिसर्च कहाँ पे करनी है। और आइनो फर्स्ट जो है वो 13,500 एसेट क्लास पे डेली फोरकास्ट देता है, जिसके अंदर स्टॉक्स हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स हैं, कमोडिटीज है, करेंसीज हैं, इंडाइसेस हैं, और सभी तरह जो भी आपको ये रिकमेंडेशंस मिलती हैं या जो फोरकास्ट मिलते हैं, ये लॉन्ग टर्म, मिड टर्म और शॉर्ट टर्म के लिए मिलते हैं। और आइनो फर्स्ट जो है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, इसके अलावा 50 ग्लोबल स्टॉक एक्सचेंजेस पर अपने फोरकास्ट प्रोवाइड करता है, जिसमें यूएस, यूरोप, इजराइल और एशिया के बाजार जो है वो शामिल है। सो ये एक आइनो फर्स्ट का पूरा ब्रीफ है कि आइनो फर्स्ट हमारी किस तरह से हेल्प करता है, और हम आइनो फर्स्ट का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं वो मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूँ। यार सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो आज का ही ये फोरकास्ट है, ठीक है, 16th ऑफ जनवरी को 7 डे के टाइम फ्रेम में स्मॉल कैप के अंदर एआई ने हमें 10 स्टॉक्स जो थे वो लॉन्ग पॉजिटिव साइड के, और 10 स्टॉक्स जो थे वो नेगेटिव साइड्स के दिखाए थे, जहां पर पॉजिटिव या नेगेटिव साइड मूव हो सकता है। सो पॉजिटिव में आप देख सकते हैं कि 10 में से 3 स्टॉक्स ने जो है वो इंट्राडे में ही काफी अच्छा पैटर्न फॉलो किया है, और जिसके अंदर क्यूबिक्स ट्यूबिंग्स जो है वो 3% से ज़्यादा तेजी दिखा रहा है। कैलिफोर्निया सॉफ्टवेयर जो है वो 5% के सर्किट पर है, और बीजीआर एनर्जी सिस्टम्स जो है ये भी 2% के आसपास की तेजी हमें दिखा रहा है। सो ये फोकस जो है ये आइनो फर्स्ट की स्क्रीन पर आपको शून्य के अंदर देखने को मिलता है। ओवर टू यू एरन सर। Okay, thank you. So a little bit about the team. The INO-FIRST predictive algorithm was developed by the INO-FIRST R&D team that being led by Dr. Lipa Reutemann, one of the leading experts in the field of artificial intelligence, machine learning, artificial neural networks from the Weizmann Institute of Science. Dr. Reutemann is leading our unique R&D team that includes
PhDs, people with the background of data science, math, statistics, physics, AI, machine learning experts. We have math professor as part of the core R&D team, as well as employees with the background of data science, and also IDF veterans, specifically from the intelligence unit. Ben is the head of our advisory services. He's advisor, used to work for one of the leading banks in Israel as a financial advisor. My name is Yaron Golger. I'm the co-founder, the CEO of I Know First. I'm also the chairman of the Israeli Export Institute. I'm lecturing for fintech at one of the leading universities in Israel. I'm an engineer, and it's nice to meet you all. यस सो हम बात कर लेते हैं आई नो फर्स्ट की टीम के बारे में। जिन लोगों ने हमारे लिए ये एक तरह से हमारी फाइनेंस इंडस्ट्री में तो ये अजूबा ही है, क्योंकि अभी हम जिस टेक्नोलॉजी की बात करें एआई की, काफी सारी जगह आपने एआई का इस्तेमाल होते हुए देखा होगा। स्टॉक मार्केट में भी काफी जगह एआई का यूज होता है, बट कभी भी एआई आपको स्टॉक रिकमेंडेशन मतलब स्टॉक्स पे फोरकास्ट नहीं दिखा सकता। हाँ, ये आप अपना स्टॉक एआई को दिखा के काम करवा सकते हो, लेकिन एआई के स्टॉक को देख के हम काम कर रहे हैं, वो चीज थोड़ी सी डिफरेंट है। तो इसलिए आई वुड से कि एक अजूबा है फिनटेक इंडस्ट्री में आई नो फर्स्ट। तो इससे जो पूरी टीम जिनकी ये मेहनत है, उसमें डॉक्टर लिपा रोइटमैन जो कि को फाउंडर एंड चीफ साइंटिस्ट हैं आई नो फर्स्ट के, जिन्हें 23 इयर्स से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग का। साथ ही मिस्टर यारोन है जो कि हमारे साथ इस टाइम अवेलेबल हैं, और ये रिनोड इंस्टीट्यूट्स में जो है अपने ट्रेनिंग देते हैं एआई एंड मशीन लर्निंग की, मतलब पढ़ाते हैं। और साथ ही ये चेयरमैन हैं इजराइल एक्सपोर्ट इंस्टीट्यूट के और फिनटेक बोर्ड के। सो और मिस्टर बेन रूबिन जो कि इस टाइम हमारे साथ किसी मीटिंग में है, तो ये हैं हेड ऑफ द एडवाइजरी। और साथ ही इन्हें भी काफ़ी एक्सपीरियंस है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग का। सो और पूरी R&D एक यूनिक टीम बैठी हुई है जो पीछे से हमारे लिए इस मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मॉडल को रन कर रही है, और डेली बेसिस पर हमारे लिए बेटर इन्वेस्टमेंट और बेटर ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के लेकर आते हैं। ओवर टू यू एरन सर। Thank you. The I Know First predictive algorithm is being trusted by the world's leading hedge funds, investment houses, banks, family offices, brokerage firms, as well as retail clients from all over the world that utilizing the predictive algorithm in order to identify opportunities in the market on a daily basis. With some of the entities here, with some of the investment houses here, we have also developed financial product. With Meitav, we have developed the first AI-powered mutual fund that are being listed in the Tel Aviv Stock Exchange and available to the public here. And we are doing it in additional regions around the globe. And all those clients are using the predictive algorithm in order to identify opportunities in the market on a daily basis. Let's continue. So yeah, please. please. Yes, slide nice. सो अगर क्लाइंट्स की बात करें, आई नो फर्स्ट कौन लोग इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि जब हम बात कर रहे हैं जब हम हिंदुस्तान के बाजार में होते हैं तो हम लोग ये देखना पसंद करते हैं कि और कौन इस्तेमाल कर रहा है ना। तो इसमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं जो लोग आई नो फर्स्ट यूज़ करते हैं। कुछ मेजर क्लाइंट्स की अगर हम बात करें तो नेशनल बैंक ऑफ कनाडा, बैंक ऑफ अमेरिका, ये सी कैपिटल, ये काफ़ी रिनोड नेम है, टोटल कैपिटल,
मिताओ एक म्यूचुअल फंड एजेंसी है, एएमसी बोल सकते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, जो कि एआई के बेसिस पर ही ये काफी यूनिक है कि कोई म्यूचुअल फंड कोई एसेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड सिलेक्शंस जो के लिए जो स्टॉक सिलेक्शन कर रही है, वो विद द हेल्प ऑफ एआई कर रही है, और पीछे जो सपोर्ट कर रहा है वो आई नो फर्स्ट है। सो काफी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो आई नो फर्स्ट के क्लाइंट्स हैं। उसके अलावा कुछ अदर इन्वेस्टमेंट हाउसेस जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, वो बैंक्स, फैमिली ऑफिसेस, ब्रोकरेज फर्म्स जो हैं वो आई नो फर्स्ट के क्लाइंट्स हैं। और यही आई नो फर्स्ट जो मतलब ये सेम है सबके लिए, चाहे कोई इंडिविजुअल यूज कर रहा है या फिर वो कोई ऑर्गेनाइजेशन यूज कर रही है, दोनों के लिए ही आई नो फर्स्ट जो है वो बिल्कुल सेम रहेगा। ऐसा नहीं है कि उनके लिए कुछ स्पेशल सर्विसेज ऑफर की जा रही हैं जो शून्य के क्लाइंट्स को नहीं मिलेंगी। सो ये सेम है सभी के लिए। ओवर टू यू यारन सर। Okay, thank you. The solution that you're about to see has received several awards, including from different entities from all over the world. UBS, Entity Data in Japan, the Wealth Tech Forum, the Geneva Wealth Tech Forum, and also from different, here you can see several photos. Who knows who is this guy on the left side? Okay, by the end of the webinar, we will see who had a good. I mean, we will collect all the positive answers. Let's continue. Some of the words also happened in India. Here you can see Ben in the Bombay Stock Exchange. So basically, we are offering two solutions to our clients. On one hand, it's possible to utilize a predictive algorithm in order to identify opportunities from the market, from the Indian market, basically, from the different asset classes or the different universes in the Indian market, small cap, mid cap, and also large cap. And on top of that, we are also developing financial products by utilizing the very same technology and the very same predictions. And here we have developed the first AI-powered mutual fund that is available right now in Israel. सो आई नो फर्स्ट को काफी इंटरनेशनल अवार्ड से नवाजा भी गया है, क्योंकि जब बात होती है क्रेडिबिलिटी की, सो आई नो फर्स्ट ने बेंजिगा से आई नो फर्स्ट अवॉर्डेड है, जो कि काफी रिनॉर्ड एक फिनटेक अवार्ड होता है। और आई नो फर्स्ट को आई नो फर्स्ट अपने आप में एक ऐसी कंपनी है जो कि इंटरनेशनल हर एक मार्केट में, मतलब 50 से ज्यादा स्टॉक एक्सचेंजेस पर अपने प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कर रही है। और हर एक एसेट क्लास में 15,000 से ज्यादा एसेट्स हैं जिनके ऊपर अपनी प्रेडिक्शंस प्रोवाइड कराते हैं डेली बेसिस पर। और ये जो प्रेडिक्शंस होती हैं इंट्राडे के लिए नहीं होती हैं, ये मिनिमम 3 days to 1 year होती है। और वर्ल्ड टेक 100 में जो है 2023 के अंदर आई नो फर्स्ट को मोस्ट इनोवेटिव वर्ल्ड टेक कंपनी का अवार्ड मिला था। उसके बाद यूबीएस से अवार्डेड है आई नो फर्स्ट, और जिनीवा वर्ल्ड टेक अवार्ड 2019 में विनर रहा है आई नो फर्स्ट। सो काफी एक यूनिक अप्रोच के साथ आई नो फर्स्ट मार्केट में है। और अभी जो यारों ने कहा कि हमें एक इमेज है जिसे हमें बताना है हु इज दिस पर्सन इन दिस इमेज, और उसके अंदर कुछ एक आप सभी के लिए एक सरप्राइज अवार्ड भी होगा अगर आप सही गैस कर पाते हैं तो। सो काफी जैसा मैंने आपको बताया कि आई नो फर्स्ट का इस्तेमाल काफी बड़े बड़े फैमिली ऑफिसेज में होता है और एसेट मैनेजमेंट कंपनीज करती हैं। सो ये मिस्टर बेन है जो कि मुंबई के अंदर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो हमारा बीएसई है वहां पर आई नो फर्स्ट के बारे में बता रहे हैं। और
पूरा इन्होंने इंडिया फिनटेक अवार्ड के अंदर आकर अपने 2018 में आइनो फर्स्ट के पूरे प्रोडक्ट को डिस्क्राइब किया था कि किस तरह ये इंडियन मार्केट्स में अपनी एक अहम भूमिका अदा कर सकता है। सो आइनो फर्स्ट करता क्या है, तो आइनो फर्स्ट जो है वो एआई बेस्ड प्रेडिक्टिव सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता है अपने रिटेल एंड इंस्टीट्यूशनल दोनों ही तरह के क्लाइंट्स को, और साथ ही साथ कुछ फंड मैनेजमेंट्स भी करते हैं, बट नॉट इन इंडिया। सो ऐसे एआई बेस्ड प्रोडक्ट बना रहे हैं जो कि लीडिंग हेज फंड्स जो हैं वो यूज करते हैं, और साथ ही साथ एसेट मैनेजमेंट कंपनीज यूज करती हैं। सो अगर हम बात करें रिटर्न की मार्केट की, तो मार्केट की रिटर्न आप इस चार्ट पे देख सकते हैं जो आपको 73.3.9% दिख रही है, और आयनो फर्स्ट की जो रिटर्न है उतने ही टाइम फ्रेम में वो 227.93% की है। सो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मार्केट जिसको हम बेंचमार्क मान के चलते हैं उसको 154% से आउट परफॉर्म किया है आइनो फर्स्ट की स्ट्रेटेजीज ने। सो इट्स रियली अ ग्रेट प्लेटफॉर्म टू यूज, और इसकी हेल्प से हम अपनी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत बेहतर बना सकते हैं। Over to you, Yaran sir. Thank you. The I know first predictive algorithm includes three components. By utilizing the first tier, it's possible to identify the most promising investment opportunities in India, in the NSE, in the BSC, across different investment universes, small caps, mid caps, and also large caps. With the second component, it's possible to receive stock market intelligence to identify the leading sectors within the Indian market, leading indices, and also sectors and indices that we should avoid. And the third component is also available to the Shoonya users, providing us the opportunity to basically to use the artificial intelligence in order to analyze our existing holdings or portfolio. And basically by combining those three components, it's possible to optimize the investment process on a daily basis. So how we do it? Every day, the algorithm is collecting huge amounts of data that's coming from the entire financial market, data from the interest rate environment, data from the Indian market, but also data that's coming from the entire world, from the interest rate market, the commodities market, the currency market, data that's coming from more than over 50 global stock exchanges. We are adding the daily data to our database. We are managing database with historical data, and around the clock, the algorithm is learning from the new data that's coming all the time from the market, learning from the historical data, and also learning from the combined data. And on a daily basis, the algorithm is building the complex network that exists in the financial market. In the financial market, there are thousands of correlation sets, and our technology is able to model all those correlations without any human intervention. And the AI algorithm is generating on a daily basis updated prediction with the best opportunities for the different time frames that we see on the right, short term, mid-term, and also long term. And basically the process is being done on a daily basis. So every day you are getting fresh opportunities from the Indian market on a daily basis, basically. तो अब हम बात करते हैं कि आयनो फर्स्ट किस तरह से हमारी हेल्प करता है। तो सबसे पहले तो हमारे लिए सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, और लीडिंग सेक्टर इंडाइसेस पे और जितने भी एसेट क्लास हैं, अभी फिलहाल इंडिया में स्टॉक्स पर ही रिकमेंडेशंस आती हैं, बट इन फ्यूचर कमोडिटीज, करेंसीज एंड अदर फ्यूचर एंड ऑप्शंस प्रोडक्ट पर भी इस पे काम किया जा रहा है। सो एंड एआई पावर्ड पोर्टफोलियो ऑप्टिमाइजेशन का जो काम है वो आपको अभी भी इंडिया में भी देखने को मिलेगा। अपनी होल्डिंग्स जो हैं, वो जो भी आपकी शून्य के साथ होल्डिंग्स हैं, वो आइनो फर्स्ट पर आप चेक कर सकते हैं,
उनके क्या प्रेडिक्शंस हैं, क्या सिग्नल्स हैं, वो डेली बेसिस पर आपको अपडेट होते हुए दिखाई देंगे। और पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन फिलहाल अभी इंडिया में नहीं है, बट इन फ्यूचर कभी आपके लिए ये फैसिलिटी भी आइनोफर्स प्रोवाइड कराएगा। सो नेक्स्ट स्लाइड आंसर प्लीज। सो अब बात होती है कि किस तरह से ये लोग इस पे काम करते हैं, और क्योंकि मतलब मेनली हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि ये जो हमारे लिए स्टॉक्स ढूंढ के लाए जा रहे हैं उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियल डेटा आता है, और उसका 15 इयर्स का उस स्टॉक का डेटाबेस निकाला जाता है। सो ऐसे स्टॉक्स जो कि 15 साल से ज्यादा लिस्टेड है, उनका 15 साल का डेटा होगा, या फिर ऐसे स्टॉक्स जो कि जिन्हें कुछ ही टाइम हुआ है लिस्ट हुए हुए, चाहे वो 10 साल हो या 15 साल से कम की बात करें, तो जहां से भी स्टार्ट हुआ है वहां से लेके आज तक का सारा जितना भी डेटा है उस स्टॉक से रिलेटेड, उसका ओपन हाई लो क्लोज, उसका वॉल्यूम, ट्रेडेड वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम, व्हाटएवर इट इज, सारा डेटा को एक डेटाबेस में लेके जाया जाता है। और फिर एक पूरी प्रोडिक्शन साइकिल होती है, और उसका जो रिजल्ट होता है उसको फिर एआई प्रिडिक्शंस के थ्रू दिखाया जाता है। 3 दिन से लेके 1 साल तक की प्रोडिक्शन होती है। 3 दिन में कौन से स्टॉक्स अपसाइड या डाउन साइड जा सकते हैं, 7 दिन में कौन से अपसाइड डाउन साइड जा सकते हैं, 14 डेज में, 1 मंथ में, 3 मंथ में, और 1 ईयर में। तो एक बात करें एक स्विंग ट्रेडिंग से लेकर एक शॉर्ट टर्म और यहाँ तक की पूरे 1 साल तक की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी भी जो है वो हमें आइनो फर्स्ट पर देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्लाइड यार आंसर प्लीज। So basically, in terms of the AI technology that we are using, we are combining different AI approaches into one algorithm, YAI algorithm. We are utilizing deep learning, artificial neural network, genetic algorithms, supervised and reinforcement learning in order to identify the most predictable assets from the Indian market. The algorithm is trying on a daily basis to separate the unpredictable part from the Indian market and to focus on the most predictable asset within the Indian market. And we are going to show you today how to identify the most predictable asset from the Indian market. सो टेक्नोलॉजी की बात करें तो किस टेक्नोलॉजी पे काम होता है, तो डीप लर्निंग अप्रोच है। मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो खुद से सीखता है। एआई का जो काम है अपनी प्रिडिक्शंस देता है, उसके ऊपर खुद ही वर्क करके देखता है कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया वो कैसा रहा, उसके ऊपर वो खुद ही को अपने आप मॉनिटर करके खुद से अपने आप को सीखने की कोशिश करता है। सेल्फ लर्निंग मॉडल होते हैं, स्केलेबल होते हैं, किसी भी तरह से स्केल कर सकते हैं। हम भी इन्हें सिखा सकते हैं। अगर आप कोई भी एआई मॉडल यूज करते हैं तो चाहे वो आप किसी भी फील्ड में यूज कर रहे हो, हमें उसे बताना पड़ता है उसका काम सही है या गलत है। अगर तो उसका काम सही है तो वो उससे भी सीखता है, उसे भी रिफॉर्म करने की कोशिश करता है। अगर उसका काम गलत है तो उस गलत को वो सही करने की कोशिश करेगा, उससे भी सीखेगा। तो ये सेल्फ लर्निंग मॉडल होते हैं। जेनेटिक एल्गोरिदम्स निकाली जाती है। सुपरवाइज लर्निंग होती है, मॉडल गलत ना सीख जाए, ठीक है, और उसको पूरा डायग्नोस करके और फिर जो है रेगुलराइज किया जाता है। पूरा रेगुलराइज्ड रहता है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी एआई ने प्रेडिक्ट कर दिया और वो आपने देख लिया। पूरा मॉडल जो है वो बिल्कुल परफेक्टली वर्क जिस अकॉर्डिंग होना चाहिए, उसके अपने जो भी स्केलेबल पैरामीटर्स हैं उन पैरामीटर्स पर जाकर वो काम करता है। देन फिर हमें वो प्रोडिक्शंस प्रोवाइड कराता है अपनी हर एक एसेट क्लास के ऊपर। ओवर टू यू। Okay, so in order to identify the best opportunities, basically we are screening the entire Indian market. We are applying our technology, machine learning, artificial neural network, genetic algorithms in order to identify the most predictable assets from the Indian market. Then we're creating the ranking in order to identify the best opportunities for the short term, mid-term, and long term. And this process is being done on a daily basis. We are going to see some live examples in the next slides. Ben? Yes.
सो एआई की जो प्रेडिक्शंस हैं वो सेम इंडियन स्टॉक मार्केट में आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स को लेके जाया जाता है। मशीन लर्निंग और जेनेटिक एल्गोरिदम्स जो हैं वो प्रेडिक्टिव फिल्टर्स लगाए जाते हैं, सिग्नल फिल्टर होते हैं, और फिर हमें 6 टाइम फ्रेम के अंदर स्टॉक्स रिकमेंड किए जाते हैं, फोकस किया जाता है कि ये स्टॉक्स हैं जो आने वाले 3 दिन से 1 साल के अंदर अपसाइड या डाउन साइड की तरफ मूव कर सकते हैं। विच एवर इज कुछ उसमें पॉजिटिव होते हैं, कुछ उसमें नेगेटिव होते हैं। तो आप उसके अकॉर्डिंग जो है अपने इन्वेस्टमेंट्स जो हैं उसके लिए स्टॉक्स पिक कर सकते हैं, उनके ऊपर अपनी रिसर्च लगा सकते हैं। अगर आपको भी लगता है कि यस ये जो स्टॉक्स हैं इनमें से किसी स्टॉक पर मैं काम कर सकता हूँ, वो आप स्टॉक्स के ऊपर काम करके अपना मार्केट को थोड़ा इजी कर सकते हैं। ये डेली अपडेट होते हैं और आपको रोज डेली मेंशन भी होता है कि किस डेट को ये स्टॉक जो है वो आपके लिए जो है फोरकास्ट किया गया है। ओवर टू यू। Okay, so the forecast comes in the shape of a heat map. As you can see here, the green cell represent long position, while the red cells represent the short position. We are using two indicators to to focus on the best stocks. One is the signal. You can see the signal in the upper number of those two lines. The signal actually represents the predictive movement of the asset or the price deviation of the asset. It's our internal index, and it helps us to rank the entire investment universe from the stock that have the most highest signal that is in the top left corner, going down to the right until the right bottom stocks that have the negative strongest signal. The second indicator is the predictability indicator. This is located beneath the signal, and it actually tells us how good the algorithm can predict a specific asset. It moves from 0 to 1, while 0 represents 50% probability that the asset will move to the predicted direction, and 1 represents 100%. So in both cases, we are trying to find the highest values for those stocks and giving more weight actually to the predictability indicator while we're choosing stocks. In this screen, we can see the dashboard in the Shoonya platform. We can see that we can jump between large cap, mid cap, small caps. We can see the time frames here to the right. We can jump between the time frames, and we have the best opportunities for each and every time frame. We can press on the 3 days and get the best stocks to buy for the next 3 days. Or in this case, 1 month, we can see the best stocks to buy in the 1 month time frame. And in the bottom of this screen, we can go to past predictions, past forecast, and see what the algorithm actually performed. And we're going to talk about other objects here in a minute. Let's give Keshav to translate. यस सो हम बात करेंगे अब कि हम ये प्रेडिक्शंस को रीड कैसे कर सकते हैं, किस तरह से प्रेडिक्शंस दिखाई जाती हैं आई नो फर्स्ट पर। सो जो आपको ग्रीन में दिख रहे हैं वो पॉजिटिव हैं, जो आप रेड में देख रहे हैं वो स्टॉक्स आने वाले टाइम पर नेगेटिव मूव कर सकते हैं। तो अब पॉजिटिव मूव और नेगेटिव मूव को हम कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? सो यहाँ पर हमें स्टॉक्स जो सजेस्ट किए जाते हैं, फोरकास्ट किया गया है एआई के थ्रू, आप इसमें देख सकते हैं 2 चीजें, सिग्नल है और प्रेडिक्टिबिलिटी है। सो सिग्नल जो आप देख रहे हैं वो आप देखेंगे आपको यहाँ पर दिखाई देगा जो सबसे मोस्ट प्रॉमिसिंग, जो जिसके अंदर सबसे ज्यादा हायर सिग्नल होगा वो सबसे टॉप पर आपको दिखाई देगा। उसके बाद धीरे धीरे सिग्नल कम होते हुए हमें दिखाई देंगे। सो अभी जो सिग्नल हमें जैसे डिक्सन का दिखाई दे रहा है तो 209.52 का सिग्नल दिख रहा है। सो अब ये है कि जैसे सिग्नल जो है वो कितना पॉजिटिव है, जो जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा उसके उतने ज्यादा चांसेस होंगे
उस जो भी डायरेक्शन प्रेडिक्ट की गई है, चाहे वो पॉजिटिव की या नेगेटिव की, उस डायरेक्शन में स्टॉक के मूव करने के। अब रही बात प्रेडिक्टेबिलिटी की, तो प्रेडिक्टेबिलिटी क्या है? पास्ट एल्गोरिथमिक जो प्रिडिक्शंस रही हैं उसकी एक्चुअल मार्केट मूवमेंट जो रही है वो शो करता है। तो जब जब 209.52 का सिग्नल आया है, तब 0.49 की प्रेडिक्टेबिलिटी से स्टॉक ने मूव किया है। अब 0.49 को कैसे रीड करेंगे? तो ये एक प्रेडिक्टेबिलिटी होती है जो कि 0 से 1 तक मेजर की जाती है। तो अगर ये 0.49 है, इसका मतलब है कि स्टॉक को जब जब 209, मतलब इसको हम पॉइंट परसेंटेज भी मान सकते हैं, 49% टाइम स्टॉक्स ने जो है उसके अकॉर्डिंग मूव किया है। तो हायर द प्रेडिक्टेबिलिटी, हायर द सिग्नल, हमें सबसे ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो अगर किसी स्टॉक के अंदर ये प्रेडिक्टेबिलिटी 80-90% है, मतलब 0.80-0.90 दिखाई देती है, तो इसका मतलब है कि 80-90% चांस है कि वो स्टॉक जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस तरफ की उसकी प्रेडिक्शंस दिखाई जा रही हैं। तो आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम में चेक करना है। जो स्टॉक्स मल्टीपल टाइम फ्रेम्स में अवेलेबल होते हैं वो स्टॉक्स जो है काफी अच्छा रिजल्ट दिखाते हैं आइनो फर्स्ट के प्लेटफॉर्म पे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस। सो जैसे मैंने आपको बताया, तीनों ही एसेट क्लास में दिखाए जाते हैं रिजल्ट्स, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, और 6 टाइम फ्रेम में अवेलेबल है। तीनों ही एसेट क्लास के लिए 6 टाइम फ्रेम अवेलेबल हैं, 3 दिन से लेके 1 साल तक की। और 1500 स्टॉक्स जो हैं उसके ऊपर, 1500 स्टॉक्स के ऊपर ये प्रेडिक्शंस आती हैं। तो नीचे से आप जो है स्क्रॉल करके, टैब करके 1 2 3 4 5 ऐसे करके अलग अलग नंबर्स के टैब हैं, उस पे जाके आप डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की फोरकास्ट को मेजर कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। जो टॉप परफॉर्मिंग होंगे वो आपको टॉप 10 पॉजिटिव साइड के और टॉप 10 नेगेटिव साइड्स के आपको जो है वो फ्रंट स्क्रीन पर ही देखने को मिल जाएंगे। ओवर टू यू मैन। Okay, so pressing on the indices button, we can see the best indices for the Indian market, again, for the 6 time frames. So we can see which sector and which indices are the best for the next month, or next 3 months, or even next week. We can see performance of the forecast if by pressing the performance button, and even see our holdings and see our portfolio while pressing the holding button, and we can see what the algorithm thinks about the stocks that we have in our portfolio. We can see it here. We have our stocks that we bought, and then we have the algorithm predictability and signal to each and every stock, and we can see if the stock is still good to hold or we have to sell it. So that's the features that we have in the Shoonya app. Of course, it's available on desktop and on app as well. You can use it both ways. यस। सो अब जैसे मैंने आपको बताया कि स्टॉक्स के ऊपर, स्टॉक्स के साथ साथ हमें इंडाइसेस पर भी फोकस देखने को मिलता है। फ्यूचर और ऑप्शंस के ट्रेड नहीं डिस्क्राइब करता, बट लेकिन हम इंडाइसेस देख सकते हैं, इंडाइसेस कैसे मूव करेंगे। सो इंडाइसेस को जो भी हमारे इंडाइसेस है, जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी, और जितने भी सेक्टोरियल इंडाइसेस हैं, अब इसके हेल्प हम ले कैसे सकते हैं, इसकी हमें इसका बेनिफिट कैसे होगा? सो मान लीजिए अगर कोई फार्मा स्टॉक दिखाया जा रहा है, आईटी स्टॉक दिखाया जा रहा है, हम उसी के अकॉर्डिंग उसका सेक्टर भी देख सकते हैं, उसके सेक्टर का क्या फोरकास्ट है। अगर मान लीजिए कोई ऑटो स्टॉक दिखाया है, ठीक है, और ऑटो स्टॉक का हमें सेक्टर फोरकास्ट जो है वो रेड में दिख रहा है, बट किसी पर्टिकुलर स्टॉक का ग्रीन में दिख रहा है, तो एक हमारे लिए रेड सिग्नल वही आ जाता है कि यहाँ दोनों कॉमन नहीं है, मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ हो सकती है। बट अगर किसी सेक्टर का भी इंडाइसेस जो है वो भी आपको ग्रीन दिखा रहा है, उसके अंदर भी प्रोडिक्शंस जो है वो पॉजिटिव दिखाई दे रही हैं, तो फिर हम ऐसी जगह पर कुछ अपनी पोजीशंस क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि मतलब हम अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग, हमारी रिसर्च भी कह रही है ऊपर जाएगा,
एआई भी कह रहा है ऊपर जाएगा, उसका सेक्टोरियल इंडाइसेस भी कह रहा है ऊपर जाएगा। तो मतलब मल्टीपल जगह पे हम उसकी फोरकास्ट को जो है वो वेट कर सकते हैं कि यस ये करेक्ट है, और यहाँ से हमें स्टॉक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव जिस टाइप का भी हम मूव देखना चाह रहे हैं वो दिखा सकता है। ठीक है, सो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके अलावा हम अपनी होल्डिंग्स जो हैं उसका यूज कर सकते, उन्हें हम इसके अंदर चेक कर सकते हैं कि हमने जो होल्ड किया हुआ है, जो हमारी होल्डिंग्स है वो हमें इसके अंदर एक का जो आइनो फर्स्ट है वहां पर किस तरह से दिखाई दे रहे हैं, उसके सिग्नल्स क्या हैं, उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी क्या है, वो भी हमें यहाँ पर दिख जाएंगी। सो जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि सिग्नल एंड प्रेडिक्टिबिलिटी जो है वो हमें अपने पोर्टफोलियो के ऊपर भी आइनो फर्स्ट जो है वो सजेस्ट करता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। यस, तो शून्य ऐप पर आपको आइनो फर्स्ट का जो फीचर है वो डेस्कटॉप और ऐप दोनों ही जगह पर अवेलेबल होता है। आप हब में जाकर ऐप पर इसको यूज कर सकते हैं, और अगर आपने डेस्कटॉप वर्जन यूज करना है तो आप beta.shunnya.com के ऊपर जाकर इसको यूज कर सकते हैं। Okay, so now we can see some examples from today's forecast. We actually took it from the Shoonya platform today forecast. We can see a few stocks that, for example, SRF, that the predictability is here pretty high than the rest, and we can see the returns that are already being performing pretty good with 3.6% just today. We can see Adani Green Energy, for example, with 3.25%, and we can find the Adani Enterprise with 2% up. Just from today, quick examples from stocks that we can buy and actually outperforming the market. This is the 1 month predictions, as we can see here, and already today it's actually performing pretty well. Another example is from the 1 year time frame. For example, we can find the stocks such as Minda Corporation that are going up by 4%, or Ramakrishna Forgings that goes up by 4.14, and also Electro Greenwich Limited that also going up. And here we can find that predictability is much higher than the shorter time frames. So we're actually giving you or suggesting you to focus on the longer time frames of 1 month, 3 months, and focus on the highest predictability levels. यस, सो हम बात कर रहे हैं अब जब एआई की, तो ये फोरकास्ट जो आपको दिखा रहा है जो आज ही के दिन अपडेट हुआ है हमारे आइनो फर्स्ट पर, जैसा मैंने आपको बताया ये डेली अपडेट होता है। सो आज 16 ऑफ जनवरी को 1 मंथ के टाइम फ्रेम पर एआई ने जो प्रेडिक्शंस दी थी वो इन लार्ज कैप के इन 10 स्टॉक्स पर दी थी। 10 स्टॉक्स को इसने पॉजिटिव दिया था, 10 स्टॉक्स को इसने नेगेटिव मूव दिखाया था कि स्टॉक्स जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव में मूव कर सकते हैं। सो इसमें से 3 स्टॉक, एक महीने की बात हुई है, लेकिन इसमें से 3 स्टॉक्स जो हैं वो एसआरएफ, अडानी ग्रीन और अडानी एंटरप्राइजेस, इन तीनों ने 2% से लेकर 3.5% तक ज्यादा की तेजी हमें देखने को मिली है। साथ ही हम बात करें, ये लार्ज कैप था, अब हम मिड कैप की बात करेंगे। मिड कैप के स्टॉक्स में नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। यस, सो मिड कैप में ये 1 ईयर की बात कर रहे हैं हम आज ही के दिन, जैसा मैंने आपको बताया डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स में होता है, तो हम आपको हर एक टाइम फ्रेम दिखा रहे हैं। 16 ऑफ जनवरी 2025 को एक साल के लिए प्रेडिक्ट किए थे 10 स्टॉक पॉजिटिव, 10 स्टॉक नेगेटिव। इसके अंदर 3 स्टॉक, 10 में से 3 स्टॉक्स ने पॉजिटिव मूव दिखाया है, आप 2.85% से 4% तक के मूव्स इसमें देख सकते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा मिंडा कॉर्पोरेशन, रामकृष्णा फोर्जिंग्स लिमिटेड, इलेक्ट्रा ग्रीन टेक, ये 3 स्टॉक्स जो हैं जिन्होंने 2.85% से लेके 4.14% तक की तेजी दिखाई है। सो ये जो भी प्रेडिक्शंस है ये आज ही के दिन दी गई थी, ये डेली बेसिस पर अपडेट होती हैं, और इनका जो टाइम फ्रेम है वो 1 साल है। 1 साल के लिए इसको पॉजिटिव दिखाया गया है, और आपको एक दिन में भी रिजल्ट आता है, और ऐसा नहीं है कि 1 साल बाद बढ़ेगा या 1 साल का है, लेकिन हाँ 1 साल तक की प्रेडिक्शन है कि स्टॉक जो है वो पॉजिटिव मूव करेगा।
Okay, and in our last webinar, in the same way, we showed you the best stocks for the following month from 21 of November, and these are the results of those leading stocks. We can see three software 6.3%. Aaron jumped by 18% in this 1 month time frame, and other stocks such as IZMO that jumped by almost 17%. And the most amazing thing about that the index itself, the Nifty 50, went down by more than 5% in this time frame of 1 month. So the algorithm actually find stocks that moved up against the original general trend of the market. And that's what our algorithm is doing the best, to find the best opportunities in every market. If it's a going down market or going up market, the algorithm can locate and identify the most promising investment opportunities for each and every time frame. अगर हम बात करें हमारे पुराने वेबिनार की, जो कि 21 नवंबर को हुआ था, उसमें 1 मंथ के टाइम फ्रेम पे कुछ स्टॉक्स जो थे वो हमने आपको शोकेस किए थे आई नो फर्स्ट के इसी वेबिनार में। वहां से अगर हम मूवमेंट देखेंगे तो जैसा कि आप लोग भी जानते हैं बाजार का क्या हाल रहा है, पिछले 1 महीने में बाजार किस तरह से मूव किया है। वहां पर भी हमें जो है आई नो फर्स्ट ने जो मोस्ट प्रॉमिसिंग स्टॉक्स दिखाए थे कि जिसके अंदर हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकता है, तो उसके अंदर जिन्होंने सबसे अच्छा मूव करके दिखाया है 10 में से 5 स्टॉक, जिसमें टेरासॉफ्ट ने से 6% से ज्यादा की मूवमेंट, एरॉन में 18% से ज्यादा की मूवमेंट, इसमो में 17% के आसपास की मूवमेंट हमें देखने को मिली है। ऐसे प्रेडिक्शंस इतने खराब बाजार में भी आई नो फर्स्ट हमें करके देता है, जहां पर हमें पॉजिटिव मूव देखने को मिल सकते हैं इसी बाजार के। ये इसी तरह के जो जैसे हमने आपको पहले भी अभी दिखाया कि आज की प्रेडिक्शंस दिखाई हैं, हम अगले वेबिनार में उनको भी वेट करेंगे कि जो हमने 1 महीने पहले प्रेडिक्शंस वेबिनार में दिखाई थी, जो रिकमेंडेशंस दिखाई थी, वो कैसे उनके रिजल्ट्स क्या रहे हैं। इसी तरह के लास्ट वेबिनार जो हमारा 21 नवंबर को हुआ था, उसके रिजल्ट्स हम आपको दिखा रहे हैं कि वहां से जो हमने आपको उस वेबिनार में जो स्टॉक्स शोकेस किए थे उनके क्या रिजल्ट्स रहे हैं आज तक के मार्केट के। ओवर टू यू मैन। Another example from our last webinar, and actually we talked about it in, I think, the first webinar as well, is Dixon stock. This one we can see from the 21 of November, the algorithm gave it a really good signal, and the predictability is also one of the highest here out of the list. And we can see that since November 21, 2024, the stocks made almost 20%. Again, while the market, the Nifty actually went down in the same time frame, and Dixon is one of our favorite stocks here, and we also the algorithm also liked it in the middle of June. You can see and find it in our last webinars as well. डिक्सन का जो स्टॉक था, ये हमने हमारे लास्ट वेबिनार में भी इसको बताया था, और इस स्टॉक को भी आप देख सकते हैं कि जब मार्केट ने इतना नेगेटिव मूव किया, उसके बावजूद भी डिक्सन का जो स्टॉक था वो काफी पॉजिटिव मूवमेंट्स जो है वो दिखा रहा था। और 21 नवंबर को ये स्टॉक जो है वो शोकेस किया गया था 1 महीने के लिए। तो आप देख सकते हैं नवंबर से लेकर दिसंबर का जो मिड रहा है, वहां तक स्टॉक ने कितनी जबरदस्त तेजी दिखाई है। ऐसी कुछ प्रॉमिसिंग इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आई नो फर्स्ट हमें दिखाता है। 21 नवंबर को आप देख सकते हैं सिग्नल का, अगर बात करें डिक्सन के, तो 224 के सिग्नल थे और प्रिडिक्टिबिलिटी 0.69% की थी। डिपेंड करता है आप किस टाइम फ्रेम में देख रहे हैं और कितनी प्रेडिक्टिबिलिटी को आप उसको एड्रेस कर रहे हैं, किस स्टॉक को। हर स्टॉक की प्रेडिक्टिबिलिटी अलग है, हर सिग्नल की प्रेडिक्टिबिलिटी अलग है।
हो सकता है आप कोई सिग्नल देख रहे हो जिसका सिग्नल हो 1000 और उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी हो 40, और कोई आप सिग्नल देख रहे हो 300 का और उसकी प्रेडिक्टिबिलिटी हो 90। तो जितनी ज्यादा प्रेडिक्टिबिलिटी होगी उतना उसके अकॉर्डिंग वो मूव करने का वो रखता है, और जितने ज्यादा सिग्नल स्ट्रांग, जितनी ज्यादा प्रेडिक्टिबिलिटी स्ट्रांग, उतना ज्यादा स्टॉक का मूवमेंट स्ट्रांग होगा। सो इट डजेंट मीन के 0.49 से उसकी से 49% की एक्यूरेसी है। वो डिपेंड करता है स्टॉक टू स्टॉक, सिग्नल टू सिग्नल, प्रिडिक्शन टू प्रिडिक्शन। वो पर्टिकुलर प्रिडिक्शन कैसा मूव, वो स्टॉक उस सिग्नल पे कितना मूव करता है उसके अकॉर्डिंग। तो इट्स एआई, ये आपको पूरी तरह से ऐसा नहीं है कि हमने इस पे डिपेंडेंट होना है, लेकिन हाँ जहाँ सिग्नल अच्छा है, जहाँ प्रेडिक्टिबिलिटी अच्छी है, वहाँ एटलीस्ट हम अपनी रिसर्च लगाकर उसको चेक तो कर ही सकते हैं। Okay, so in this special webinar, you have a special sale. You can get all these forecasts through the Shoonya app, and you can get the daily forecast, AI daily forecast. We have 6 time frames as we saw in the forecast: 3 days, 7 days, 14 days, 1 month, 3 months, and 1 year. And you get the top stocks from the Indian market, if it's a large cap, mid cap, or small cap. You get the sector in the indices page and the forecast. You can see which indices are going to be the best for the next 6 time frames. And of course, you get the customized AI power forecast for your holdings, and can see and follow which of your holdings are need to be sold or keep holding them. So the algorithm is actually giving you the predictions on a daily basis to your portfolio, and you get all of this for 7.99 Indian rupee per month. This introduction price for today only. You get all of these features in this monthly subscription. So it's a really good deal that you should use. And again, all what you saw, the forecast that you saw right now, if it's a large cap or mid cap or small cap forecast, you get it in this special webinar sale to all of the best Indian stocks for 6 time frames. सो ये एक स्पेशल वेबिनार सेल है जिसमें आपको मिल रही है ये की डेली फोकस 6 टाइम फ्रेम में, और पूरे इंडियन मार्केट से, जहां पर आपको लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही कैटेगरी के स्टॉक्स आपको देखने को मिल जाएंगे। सेक्टर इंडाइसेस पर भी आपको इसका फोकस देखने को मिलेगा, और आपकी अपनी होल्डिंग के ऊपर भी आप अपना एआई फोरकास्ट लगा सकते हैं। प्राइसिंग है 799 पर मंथ। आपको ये स्पेशल इंट्रोडक्शन प्राइस है जो कि शून्य यूजर्स के लिए ही है। अगर आप आइनो फर्स्ट की अपनी वेबसाइट से भी जाकर इसको बाय करना चाहते हैं तो वहां पर आपको ये $200-300 के आसपास का पड़ता है, और उसके अंदर भी आपको पूरी फैसिलिटीज नहीं मिल पाती है। शून्य पर आपको जो है ये काफी बेहतर प्राइस पर सिर्फ 800 रुपए में आपको ये हर महीने के लिए अवेलेबल होता है, 800 रुपए महीने पर, और कोई 799 पर मंथ पर। और इट्स नॉट अ बिग डील कि हम अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी में अगर किसी का एक सपोर्ट लेना चाहें, वो भी इतने कम प्राइस में, एक एआई जैसी चीज का। आज के टाइम पे तो हम अगर किसी अच्छे रेस्टोरेंट में दाल भी ऑर्डर करते हैं तो उसका भी सेम प्राइस हो जाता है। तो एक दाल की कीमत पर आपको आप ये समझ लीजिए कि एक एआई का सपोर्ट मिल रहा है, जो कि हमें हमारी इन्वेस्टमेंट जर्नी को बेहतर बनाने में काफी यूजफुल हो सकता है। Yep, and from the peak since the middle of September, we can see that the Nifty is actually in a going downtrend. The markets are more negative right now in the Indian market, but still we can find in each and every time frame that we're going to see now that the algorithm can identify a positive and long opportunities that can outperform the market and provide us some positive returns. You can find it in the small cap of 3 days. This is an example from January 7th this year. We can see the stocks that the algorithm suggested to go long, and we can see the returns here
in the side of this table. If it's 10%, 10.2, 8.22, and we can see that the average is actually 2.22, while the index and the benchmark actually moved down by 0.75%. So this is an example for short time frames. In the 3 days, those stocks performed these incredible returns and moving against the benchmark. We can also see it in the 7 days time frame. The algorithm from December 30th of December gave us the best stocks to be in. Again, the market went down. The average was 5.2, and we can see stocks that moved by 25 and 50% in a 1 week time frame. Again, this is from the small cap universe. So this is more than 6% outperformance over the benchmarks, over the market. Quite exactly. impressive. And even more than that, it's finding positive stocks in the going down market, which is really hard to find. Yep. यस सो हम अगर बात करें एक प्रेडिक्शंस की तो सिर्फ 3 डेज की पास्ट परफॉर्मेंस प्रेडिक्शंस स्मॉल कैप स्टॉक्स पे अगर हम बात करते हैं तो जहां पर हमें इंडाइसेस का नेगेटिव मार्किंग देखने को मिल रहा था वहां पर हमें आईकेएफ की एवरेज में चाहे थोड़ा ही लेकिन एटलीस्ट 2% का हमें पॉजिटिव देखने को मिला है 2% से ज्यादा के पॉजिटिव मार्क्स रहे हैं स्मॉल कैप पर नेक्स्ट स्लाइड Ben प्लीज What's interesting, by the way, in the 3 days prediction is to know that the assets with the strongest signals, which are Visa Steel and also Coffee Day, are also generating the highest return over against the market. यस यस सो कॉफी डे का जो रिटर्न रहा है वो 10% से ज्यादा मूव किया है और मतलब अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स का जो है वो हमें देखने को यहाँ पर मिल रहा है तो कॉफी डे का जो प्रिडिक्शन रहा है वो हमें 10 कॉफी डे का जो रिटर्न रहा है वो 10% से ज्यादा रहा है वीजा स्टील का भी 10% से ऊपर रहा है 8% का बीजीआर एनर्जी का ऐसे अलग अलग हमें देखने को मिल रहे हैं तो जहां पर इंडेक्स डाउन जा रहा है लेकिन आईकेएफ की जो एवरेज है वो हमें पॉजिटिव में लेके आ रही है सो ऐसे खराब बाजार में भी जहां पर हमें हर तरफ तबाही नजर आ रही है बट वहां पर भी जो है आइनो फर्स्ट जो है वो ऐसी प्रेडिक्शंस हमारे लिए ऐसे रिकमेंडेशंस लेके आ रहा है ऐसे प्रेडिक्शंस लेके आ रहा है जो हमें पॉजिटिव मूव दिला सकती हैं बट जरूरत है हमें अपनी रिसर्च की भी क्योंकि हम अपनी रिसर्च के साथ ही इसको अप्लाई करने का आपको सुझाव देते हैं और जब हम बात कर रहे हैं 7 डे की तो 7 दिन में बाजार का जो मूव रहा है वो लगभग 1% डाउन कर रहा है लेकिन आईकेएफ का जो एवरेज रहा है वो 5% से ज्यादा पॉजिटिव में रहा है सो और जिसके अंदर सबसे ज्यादा रिटर्न एक स्टॉक जो कि हमें 25% से ज्यादा की मूव दिखा रहा है सो ऐसे ऐसे स्टॉक्स प्रिडिक्शन ऐसे ऐसे स्टॉक्स जो हैं वो एआई की हेल्प से हमारे सामने आते हैं जिन पे हम अपनी रिसर्च लगाकर खुद उसके ऊपर फिर अपना डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं नेक्स्ट स्लाइड प्लीज यस Okay. In the same way, we can find it in the 14 days. Again, this is 24th of December. We can see the best 7 stocks that the algorithm gave us to hold for the next 14 days. And again, providing a positive performance, average performance against the negative market. And we can find also Dixon here. The algorithm really likes this stock. And we can see, for example, Adani Enterprises, which is 7.7%, and this stocks again has the highest signal out of all of those signals in the forecast. And in the 1 month time frame, which I think it's really interesting because there the market was really negative, and again the algorithm can find stocks that's jumped by 12%, 10%, 8%.
and moving against the market, which is quite incredible. The 1 month time frame, we can see the stocks again with those one with the highest predictability and highest signal actually performing the best. For example, you can see CO Forge here with almost 13%. अब जो हम बात कर रहे हैं, अभी तक हमने स्मॉल कैप स्टॉक्स की बात की, अब थोड़ा लार्ज कैप स्टॉक्स पर भी आ जाते हैं। लार्ज कैप स्टॉक में भी अगर हम बात करें पिछले 15 दिन की, तो वहां पर भी हमें बाजार में नेगेटिव मूव देखने को मिले। लेकिन अगर हम बात करें आइनो फर्स्ट की, तो 1.65% के पॉजिटिव मूव दिखाए, जिसमें अडानी एंटरप्राइजेस की जो प्रेडिक्शंस थी वो पॉजिटिव की थी, जिसने 7% से ज्यादा का मूव दिखाया। मुथूट फाइनेंस की प्रेडिक्शंस जो थी वो पॉजिटिव की थी, जहां पर हमें लगभग 7% के मूव देखने को मिले। तानला सॉल्यूशन 5% के मूव, एपीएल अपोलो जैसे स्टॉक, डिक्सन जैसे स्टॉक्स में हमें एक अच्छा पॉजिटिव मूव देखने को मिला है। कोफोर्ज में अच्छा पॉजिटिव मूव, एसआरएफ में पॉजिटिव मूव। ऐसे इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो आइनो फर्स्ट हमारे लिए प्रेडिक्शंस में लेके आता है। और एआई की प्रेडिक्टेड स्टॉक्स पे अगर हम काम करते हैं, हम अपनी रिसर्च लगाते हैं। ऑब्वियस बात है, जब अगर वो पॉजिटिव देख पा रहे हैं तो हम भी अपनी रिसर्च लगा के उसके अंदर पॉजिटिव चीजें देख सकते हैं। दो जगह कंफर्मेशन, उसके बाद हम एक इंडेक्स की कंफर्मेशन ले सकते हैं कि वो पर्टिकुलर इंडेक्स में भी क्या पॉजिटिव मूव आने वाला है। इफ यस, हमारा भी पॉजिटिव, आईकेएफ का भी पॉजिटिव, इंडेक्स का भी पॉजिटिव, तो वाई हम लोग इसको परेशान हो कि मार्केट नीचे जा रहा है और हम किसी ऐसे स्टॉक में एंट्री ना करें जो कि अप साइड जाने का जो पोटेंशियल रखता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैम। यस, नेक्स्ट स्लाइड में हम 1 मंथ की बात कर रहे हैं। तो एक महीने में भी हम देखें तो मार्केट हमारा नीचे है, बट लेकिन आइनो फर्स्ट की एवरेज जो है वो 5% पॉजिटिव है विद इन अ मंथ। एक मंथ के फोरकास्ट में कोफोर्ज को आप देख सकते हैं, जिसने लगभग 13% के रिटर्न दिए। लॉरस लैब ने लगभग 11% के रिटर्न दिए। इंडियन होटल्स में हमें 8% के आसपास के मूव दिखाई दिए। एपीएल अपोलो में 7% के आसपास के मूव, एसआरएफ में 5% से ज्यादा का मूव, रेमको सीमेंट्स में 4.5% का मूव, क्रिसिल के अंदर हमें 5%, 4.5% से ज्यादा के मूव देखने को मिले। मतलब 10 में से 9 स्टॉक पॉजिटिव में रहे एक महीने के टाइम फ्रेम में। और जबकि आप बाजार देख लीजिए, आपके सामने आपके चार्ट्स होंगे, मार्केट ने एक महीने में क्या किया है और आईकेएफ के प्रेडिक्शंस ने एक महीने में क्या किया है। And now we're getting to the most, I think, impressive forecast, the 3 months forecast that started on 25 of September. And I think that was the peak of the Nifty. By then, I think the Nifty went to its peak in this specific date. And the algorithm gave us 5 stocks to focus on for the next 3 months. We can see JSW Holdings, that went up by 56%, while the Nifty went down, I think, almost by 12. We can see here in the bottom that the benchmark moved down by 0.75%, and those stocks actually perform a positive performance and a really high performance with 56% performance, almost 12. 11 and 8%. This is really impressive for a 3 months period, while the market's actually going down pretty hard. This 3 months forecast, I think, is quite amazing from the mid-cap universe, and also the 1 year forecast from 28th of December. The algorithm gave us the best stocks to hold for 1 year. And we can see stocks that move 143%, 112%, 50%, while the benchmark moved by 9%. The average of this specific forecast is 41.15%. It's quite amazing for 1 year. Giving the AI to pick the stocks for us and focus on the best stocks by signal and predictability, we can see the performance of this AI. So we highly suggest to join Shoonya, the platform,
and using the webinar cell that we suggested earlier. We can see here the importance of the predictability. We can see that the assets that are considered to be predictable also generated a very nice return. Yeah. Over 30% outperformance over the benchmark. Amazing. अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे फोरकास्ट की जो कि हमारे मार्केट के पीक पर हुए थे आज से 3 महीने पहले सितंबर 2024 में जो आयनो फर्स्ट की प्रेडिक्शंस थी वहां पर अगर हम बात करें जब हमारा मार्केट भी बिल्कुल पीक पे था सो वहां से मार्केट जो करेक्ट हुआ है वो लगभग लगभग 8% करेक्ट हुआ है और आईकेएफ के जो प्रेडिक्शंस थी उनकी अगर बात करें तो जेएसडब्ल्यू होल्डिंग में लगभग 56% का अपसाइड मूव देखने को मिला है दीपक फर्टिलाइजर 12% के मूव दिखा रहे हैं रिलायंस पावर में हमें 11% के मूव देखने को मिले हैं ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स पर हमें जो है अच्छे मूव देखने को मिले हैं ये वो स्टॉक्स हैं जो 3 महीने पहले जब मार्केट अपने पीक पर था हाईएस्ट पे था वहां पर प्रोडिक्ट किए गए थे और अगर आप एवरेज भी देखेंगे तो 4% अभी भी हम पॉजिटिव में बैठे हुए हैं हम डिफरेंट डिफरेंट स्टॉक्स की बात कर रहे हैं कोई 56% मूव कर चुका है कोई सिर्फ 0.55% मूव किया है तो इस वजह से एवरेज जो आ रही है वो आ रही है बहुत कम अदरवाइज अगर हम देखें तो मार्केट तो 8% नेगेटिव दिखा रहा है नेक्स्ट स्लाइड प्लीज मैन और वहीं अगर हम बात करें पूरे एक साल की तो आजकल तो सोशल मीडिया पर काफी आप लोग भी मीम्स देख रहे होंगे जो कि बता रहे हैं कि मार्केट के रिटर्न और एफडी के रिटर्न बराबर हो गए सो मार्केट और एफडी का रिटर्न बराबर हो सकता है लेकिन मार्केट का और आईकेएफ का रिटर्न बराबर नहीं है तो यहाँ पर हमें जो एवरेज देखने को मिल रही है वो 40% से ज्यादा पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अभी के केस में जो 28 दिसंबर 2023 को जो स्टॉक्स प्रेडिक्ट किए गए थे वो 28 दिसंबर 2024 तक अगर हम उसकी एवरेज देख रहे हैं तो 41% 41% पॉजिटिव में दिखाई दे रहा है जबकि बाजार की बात करें तो बाजार में सिर्फ 9% के रिटर्न देख रहे हैं एफडी का रिटर्न और बाजार का रिटर्न एक साथ है और आप ही के सामने इस टाइम बाजार का रिटर्न और आईकेएफ का एवरेज रिटर्न भी दिखाई दे रहा है सो 10 में से 7 स्टॉक पॉजिटिव में टोटल 41% का एवरेज आ रहा है नाइस ग्रेट Okay. So now I want to introduce another product. We actually in INO First every year launching the best AI stock sectors and stocks for the 2025 or 2024. Each year we are doing this report for the top picks of the following year. In this special report, we are suggesting the algorithm actually gives us the best stocks to hold for the entire 2025, the best indices, the best Forex, the best cryptocurrency, all the assets that you should hold for the 2025. And I want to go through with you and see what happened in the last few years with this report and his performance. We can see that the performance, we can see all the stocks, all the assets that the algorithm actually advises to hold for 2024. We can see that NVIDIA stocks is leading this forecast. Solana coin actually made a pretty good performance, more than 100%, and many other assets from the US market that are outperform the market. So now we have launched a same report for the Indian market. I'm gonna introduce it in a minute. Let's just see the other asset that the algorithm chose for 2024. If it's XSW, software and services, NVIDIA, Google stock, BLK, you can see here NVIDIA with 155%, banking, housing, semiconductors, everything that you need to hold for the next year. This report is for 2024. It outperformed the market and made some incredible results. We can also see it in the currencies universe and the commodity universe. We can find it here, and we also doing it this year.
And in 2023, the same report outperformed the market by giving a good forecast on the Brazilian market, the Nasdaq 100, the S&P 500, sectors in the US. As you can see, this report have a lot of assets from indices, stocks, or commodities or currency. So in the same way, we have launched a report for the Indian market, which holds the best stock picks for 2025 from the Indian market, the best large caps, mid cap, small cap for 2025 that you need to hold for the entire year. It's just one time you buy this report, hold the stocks for the entire year, and in the end of the year, you'll see the results. We also added the best sector in industries in India, the best S&P 500 stocks, if you're trading or want to trade in the American stock exchange. We have the currency pairs that includes the Indian rupee forecast. We have the forecast of commodities, recommended commodities, that also includes the gold, silver, and oil forecast for you, and the best cryptocurrencies that you can find. This report is a one-time payment of $179. You can find the link in the chat and in our website. So amazing report, one of our best product, just to hold and buy all these assets for 2025 at one time, and the results are quite incredible. अगर हम बात करें स्टॉक पिक्स फॉर 2025, तो एक पूरी रिपोर्ट है जिसके अंदर आपको बेस्ट एआई स्टॉक्स एंड सेक्टर्स देखने को मिलेंगे फॉर द ईयर, पूरे साल के लिए 2025 के लिए आप कहां पर अपने इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. सो अगर हम बात करें जो टॉप स्टॉक्स हैं, अगर उनकी हम रिटर्न्स की बात करें फ्रॉम 10th of January 2024 से लेके, तो उसके अंदर आप देख सकते हैं मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स जो है वो जो है पॉजिटिव मूव दिखा रहे हैं. इसमें हमें जो रिटर्न है ये एक्चुअली जो आपको देखने को मिल रहा है ये सारा 2024 का दिखाया जा रहा है. 2024 में ये जो रिकमेंडेशंस थी ये सिर्फ ऐसे ग्लोबल स्टॉक्स पर ही थी. अब जो है आपको देखने को मिलेगी कि ये हमारे इंडियन स्टॉक्स पर भी इस बार जो है वो रिकमेंडेशंस प्रेडिक्शंस जो है वो दिखाई गई हैं इस बुक्स के अंदर. सो ये कुछ टॉप पिक्स थी, कुछ ETF थे ग्लोबल इंडाइसेस के, और उनके करेंसी पेयर भी आपने देखे जिनको आप आई नो फर्स्ट की ये जो AI प्रेडिक्शन के जो 2023 के वो जो पूरा आउटपुट था उसके अंदर हमें देखने को मिला कि कितने बेहतरीन रिटर्न प्रोवाइड कराए गए. अब ये सेम चीज इंडियन मार्केट्स में भी हुई है जिसमें हमें टॉप स्टॉक पिक्स देखने को मिलेंगी 2025 की इंडियन मार्केट के लिए. इसमें लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप तीनों ही तरह के कैटेगरी के स्टॉक्स देखने को मिलेंगे. सभी सेक्टर और इंडस्ट्रीज की जो बेस्ट सेक्टर एंड बेस्ट इंडस्ट्रीज हैं इंडिया की वो भी दिखाई देंगी. और अगर आप ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो वहां का भी आप देख सकते हैं. S&P 500 के टॉप पिक्स भी दिखाए जाएंगे. फॉरेक्स पेयर, अगर आप फॉरेक्स कोई NRI क्लाइंट है या जो कि रेसिडेंट इंडियंस नहीं है वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कर सकते हैं, वो टॉप फॉरेक्स पेयर्स आपको मिल जाएंगे. और ये इसका जो प्राइस है वो $179 का है अगर आप इस वेबिनार के थ्रू इसको भी ज्वाइन करते हैं तो. सो इसमें कमोडिटीज पर गोल्ड, सिल्वर और ऑयल फोरकास्ट, और जो क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं उनके लिए भी इसके अंदर सारा कुछ है. AI के स्टॉक्स और सेक्टर 2025 के लिए. Thank you.
So in this forecast, basically, we are focusing on the long-term model, on the long-term time frames. We are mapping the best opportunities from the Indian market, from the different investment universes, the small caps, the mid caps, the large caps, the most predictable stocks for the entire year. We are basically doing the job for you here by selecting the best assets, the best sectors, the best industries. And also, we received a lot of requests about currencies predictions and commodities predictions, specifically gold, silver, and oil. So those assets are also part of this one-time report. Basically, the approach here is basically more buy and hold approach. With the first deal that we shared, this is basically you are receiving daily prediction with the best opportunities on a daily basis. Here, you're just building a position for the entire year based on a long-term approach. जो भी प्रेडिक्शंस इसके अंदर होंगी 2025 की, वो एक लॉन्ग टर्म अप्रोच के साथ होगी। मतलब हमने थ्रू आउट द ईयर का व्यू लेके चलना है, ना कि इंट्राडे का या 2-4 दिन का व्यू लेके चलना है। ये जो प्रेडिक्शंस हैं ओवरऑल ईयर के लिए होंगी। सो इसके अंदर मतलब ऐसा कुछ वो नहीं है कि आपको डेली का कुछ मिलेगा। इट्स फॉर ईयर ओनली। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो डेली फोरकास्ट इसकी प्रोवाइड होती है आइनो फर्स्ट की, तो नहीं, मिनिमम 3 डेज का फोरकास्ट करता है। 3 डेज टू 1 ईयर के फोरकास्ट जो है आपको आइनो फर्स्ट पर देखने को मिलते हैं। And of course, we still have the special webinar sale that we suggested earlier to people that trade on a daily basis or monthly basis, or even in a few weeks. You can find the special webinar sale for 709 Indian rupee per month. You get the 6 time frame of the best top picks from the Indian market, if it's a large cap, mid cap, or a small cap. You get the best sector and indices, and of course, customized AI forecast for your holding. All of that for 799 Indian rupee per month. And you can sign in actually right now through the links through the Shoonya app, and then join our service. अगर आप शून्य ऐप शून्य के यूजर हैं, तो आप जानते हैं एक्सक्लूसिव वेबिनार है और इसमें एक्सक्लूसिव सेल है आप लोगों के लिए, जो कि एआई के डेली फोरकास्ट आपके लिए प्रेडिक्ट करेगी 6 टाइम फ्रेम में पूरे इंडियन मार्केट के लिए, तीनों ही कैटेगरी में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। और साथ ही साथ आपको सेक्टोरियल फोरकास्ट भी देखने को मिलेगा और आपकी अपनी होल्डिंग्स पर आप एआई पावर्ड फोरकास्ट भी देख सकते हैं। एंड इसका यूज आप कर सकते हैं beta.shoonya.com पर, और किसी भी तरह का आपको कोई अदर क्रेडेंशियल रिक्वायर्ड नहीं है। सेम क्रेडेंशियल्स जो आपके शून्य के हैं trade.shoonya.com पर आप जो यूज करते हैं, और जो आपके मोबाइल के क्रेडेंशियल्स हैं अपने शून्य ऐप को लॉगिन करने के, सेम क्रेडेंशियल्स से ही आप beta.shoonya.com को एक्सेस कर सकते हैं। और वहां पर आपको आइनो फर्स्ट दिखाई देगा, जिसके थ्रू आप जाकर अपना आइनो फर्स्ट का प्लान एक्टिवेट कर सकते हैं और डेली बेसिस पर इस एआई पावर्ड प्रेडिक्टिव एल्गोरिदम फोरकास्ट का फायदा उठा सकते हैं। जस्ट 799 पर मंथ। All right, so I want to give you some example of the timing of the algorithm. Here we can find the JSW gel from the 25th of November. The blue line is what the stocks made in those 3 months, while the red line is actually the Nifty 50. We can see the performance of the Nifty compared to the stock that the algorithm puts in the head of the table, and we can see that it's actually went up until 160%, but also 94% is still satisfying in this time frame. Another example is the 1 year forecast from the 28th of December. We can see BBOX moved from the end of December up until now with 140%
which is quite incredible for 2024. While we've seen the indices didn't make such a good return, or even made some really low return in this year, and the algorithm can locate and identify the best stocks even for longer time frames. यस, सो अब बात करते हैं कि कहाँ पर आईनो फर्स्ट को जेएसडब्ल्यू होल्डिंग दिखाई दिया था, और उसके बाद फिर जेएसडब्ल्यू होल्डिंग ने क्या कमाल दिखाया है। सो 25 सितंबर को ये प्रेडिक्ट किया गया था, और आप देख सकते हैं आपके स्क्रीन के ऊपर उस टाइम निफ्टी की बात करें तो वहां से निफ्टी जो है वो डाउन साइड मूव दिखा रहा है, और अगर हम बात करें वहां से लेके हमारे जेएसडब्ल्यू की, तो वहां से हमें 56.36% के मूव आज तक की डेट तक के देखने को मिल रहे हैं। बट ये जो आपको अभी दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर, ये मिड ऑफ दिसंबर तक दिखाई दे रहा है। तो आज तक की बात करें तो वहां से निफ्टी जो है वो लगभग 7.5% डाउन है, और जेएसडब्ल्यू की बात करें होल्डिंग की तो वो 56% आता है। सो कुछ ऐसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स भी हमारे लिए आइनोफोर्स पिक करता है जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब वैसे आई थिंक बैन यू हैव मेंशन्ड द डेट 28/12/2020। ओके ओके, तो 2023 में जो हमें दिया गई थी प्रिडिक्शन फॉर 1 ईयर, तो 28/12 से आज तक की डेट की अगर हम बात कर रहे हैं तो 143% का हमें मूव देखने को मिला है इस स्टॉक के अंदर, ब्लैक बॉक्स लिमिटेड में। और वहां से अगर हम बात करें हमारी निफ्टी की, तो एक साल में निफ्टी के जो रिटर्न रहे हैं वो तो आपको पता ही है कि एफडी के बराबर रिटर्न देके गया है मार्केट हमें। सो ऐसे प्रॉमिसिंग सेक्टर्स हमें जो है वो आइनो फर्स्ट पर देखने को मिलते हैं। Okay, now we're gonna quickly talk about some artificial intelligence trading strategy. The second part that I know first is providing to the clients, institutional clients, basically. I'm gonna give you some quick and short examples of those strategy, and then we're gonna see the prediction for the next month. From the Indian market, what the algorithm sees for the next month in the Indian market. So those two strategies that I'm going to present are focusing one on the stocks level and one of the sectors level. We can see that the first strategy actually giving us the 25 most predictable or best stocks from the S&P 500. We can see that this specific strategy is actually outperformed the market, the S&P, by more than 150% in the last 5 years since 2020. This is what the strategy made, and the gray line is what the actually S&P made. And we see that the algorithm outperformed the market almost every month, and giving some really exciting results for our automatic strategies. या श्योर। सो अब हम बात करने वाले हैं ऐसी स्ट्रेटजीज के बारे में जो कि सेकंड पार्ट है आइनो फर्स्ट का। एक साइड तो आपने देखी जो स्टॉक रिकमेंडेशन थी, अब हम बात करेंगे स्ट्रेटजीज की, ऐसी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज जो आइनो फर्स्ट ग्लोबल ओवरसीज मार्केट में प्रोवाइड कर रहा है। जैसे जैसे सक्सेस रेट बढ़ेगा वैसे वैसे इंडिया में भी आपको ये स्ट्रेटजीज देखने को मिलेंगी। बट जो स्ट्रेटजीज हैं अगर हम उसकी बात करें तो लॉन्ग ओनली स्ट्रेटजीज में जो है वो 154% से आउट परफॉर्म किया है एआई बेस्ड स्ट्रेटजीज जो आइनोफोर्स प्रोवाइड कराता है। सो आप इसमें देख सकते हैं ये स्ट्रेटजीज चार्ट है। एसएनपी का जो रिटर्न रहा है
वो 73% का रहा है फ्रॉम द ईयर 2020, और IKF का जो रिटर्न रहा है वो 227% का रहा है फ्रॉम द ईयर 2020। 227% से ज्यादा का 227.93%। सो ये कुछ आप चार्ट देख सकते हैं किस तरह से आउट परफॉर्म किया है। सो बेंचमार्क का जो रिटर्न रहा है वो भी आपके सामने है, और जो स्ट्रेटेजीज का रिटर्न, आइनो फर्स्ट की स्ट्रेटेजीज का जो रिटर्न रहा है वो भी आपके सामने है। सो ये आपकी स्क्रीन पर आपको देखने को मिलेगा। इवन जब बेंचमार्क नेगेटिव मार्क दे रहे थे 20% के, लगभग 20% के, तब IKF का जो आपको मॉडल था वो फिर भी आपको पॉजिटिव मूव दिखा रहा था। सो ऐसी स्ट्रेटेजीज जो है, इवन कई बार हो जाता है तो इट्स अ मार्केट जहां पर हमें बेंचमार्क को कभी बीट करता हुआ ना दिखाई दे, बट ओवरऑल अगर हम देखें तो आउट परफॉर्मिंग जो है वो हमें देखने को मिलेगा आईएनओ फर्स्ट का। And the second नेक्स्ट। strategy is a simple strategy that actually focus on the best three sectors from the S&P 500. Every month, the algorithm chooses the best three sectors to invest in, and we can see here the result of this strategy is choosing three sectors out of the 11 Geeks level 1 sectors, and we can see that in 5 years the algorithm made 141%, while the S&P did 83%, and again outperformed the market by 57%. And we can see that every year the algorithm is actually outperforming the S&P, and even in 2024 with 30% compared to 25 of the S&P. And this is some of our last rebalances that we had in this specific strategy. This is October rebalance, and here we can find the sectors that the algorithm chose in every rebalance. This is the 11 sectors, and the one that are colored with yellow is the sector that the algorithm chose in every rebalance that we succeeded to outperform the benchmark in this specific strategy. सो कुछ हम ऐसी स्ट्रेटेजीज की जो लॉन्ग ओनली स्ट्रेटेजीज हैं, सो वहां पर हम देख सकते हैं सेक्टर्स के ऊपर। सो वहां पर भी आईएनओ फर्स्ट अपने स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग भी अपनी प्रिडिक्शंस देता है। सो नेक्स्ट स्लाइड मैन प्लीज। यस। सो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं आइनो फर्स्ट का जो रिटर्न रहा है वो 141% का रहा है। इवन S&P का जो रिटर्न रहा है वो 83% का रहा है। तो आउट परफॉर्मेंस यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि लगभग 55% से ज़्यादा 57% के हमें आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रही है। और ये जनवरी 2020 से लेके अभी जनवरी नवंबर 2024 तक के ये रिजल्ट्स हैं। So next slide, please. So आप चार्ट देख सकते हैं ईयरली बेसिस पर IKF के क्या रिटर्न रहे हैं और बेंचमार्क के क्या रिटर्न रहे हैं। सो हर बारी जो है आउट परफॉर्म आपको देखने को मिलेगा। आइनो फर्स्ट ने हर टाइम जो है आउट परफॉर्म किया है हर साल में अपने बेंचमार्क को। नेक्स्ट। सो ये पोर्टफोलियो ट्रैकर है जहां पर हम देख सकते हैं कि 2020 से लेके पूरा मतलब पूरा सेक्टोरियल वेटेज आपको देखने को मिल सकता है। ये ओवरसीज मार्केट में है, इंडियन मार्केट्स के लिए ये चीज़ें आने वाले टाइम पर आ जाएंगी, बट अभी ओवरसीज मार्केट में ये इस तरह की प्रोडिक्शंस जो हैं वो आइनो फर्स्ट प्रोवाइड करता है। और आप इसमें नवंबर 2024 तक के जो है चार्टर देख पा रहे हैं। नेक्स्ट। Okay, so if some of you are interested in our strategies, AI algorithm strategies, automatic strategies, please contact us by our website or by my mail.
And in the same way, we have different packages. If it's packages that belong to the US stock exchange, of course. If it's the world indices package that gives you more than 175 world indices. Of course, the fixed income that focus on the interest rates, the commodities that offers gold and silver and oil forecasts, and many other packages that you can find in our website. यस सो अगर हम बात करें वन मोर स्लाइड बेन प्लीज नो नो Sorry? प्रीवियस स्लाइड Okay. यस यस फ्रॉम ओके सो यूएस स्टॉक्स पर भी जो है अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आई नो फर्स्ट अगर आप लोग ग्लोबल मार्केट ओवरसीज मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप ये देख सकते हैं कि उनकी प्रोडिक्शंस कैसी रही हैं सो एस&पी ने जहाँ पर 0.47% के रिटर्न दिए हैं वही आई नो फर्स्ट की एवरेज अराउंड 14% की रही है सो ये 8 नवंबर का है जो 3 डेज का था अब ये 7 डेज में भी आप देख सकते हैं 4.76% के रिटर्न जनरेट किया है एस&पी ने और आईएमएफ फर्स्ट का 13% से ज्यादा का रिटर्न था सो इंडेक्स फोरकास्ट भी आप देख सकते हैं आईनो फर्स्ट का एवरेज 21% का और एस&पी का -0.39%। सो इस तरह के फोरकास्ट हमें देखने को मिलते हैं आईनो फर्स्ट पर और फिक्स्ड इनकम में भी अगर हम बात करें तो फिक्स्ड इनकम ग्रुप में भी नेगेटिव रिटर्न और आईनो फर्स्ट का एवरेज 13% से ज्यादा पॉजिटिव। कमोडिटी फोरकास्ट भी आप देख सकते हैं आईनो फर्स्ट का जो एवरेज रहा है वो 11% का रहा है। All right, and in the one of our first webinars, we also published the best stocks for the following year. It was in the middle of 2023. We saw the stock AURUM, and we saw that actually stocks moved by 58% in that year. So you better come and see the webinars and what we are publishing there on a monthly basis. And this specific forecast for a 1 year forecast was really successful. We're gonna see just in the next slides what the algorithm thinks about the market, the Indian market, in the following month. So we can actually go to see in that now. And we're seeing that the forecast for the next month is ambivalent, actually. Some sectors we should focus on, some we should avoid. Here we can find that the VIX, the volatility, the NIFT volatility is in the highest part of the table. The predictability is not that high, but the signal is pretty strong. So we accept we are supposed to have some volatility in the Indian market in the next month. But the algorithm tells us to focus on some particular sectors and indices. If it's the NIMI 150, the Nifty Mid Cap 150 looks quite positive for the next month. The Nifty IT, the Nifty tech sector also looks quite positive. Nifty Composite, GS Composite also looks pretty positive for the next month. We can also find there the NIF 20 and the Nifty dividend that has a high predictability level. In the lower part of the table, we can find the Nifty real estate that looks pretty red and probably should avoid this specific sector. We also find the Nifty NN50, which is the next 50
index. I mean, it's not the out of the Nifty 100. It's not the first Nifty, the 50 stocks. It's the second part of the 50 stocks, the second half of the Nifty 100. The Nifty PSU is the financial sector, also looks quite reddish. So the next month should be we can find some volatility in the market. We should stick to the good sectors and the good indices. And of course, in the Shoonya platform, you see the stocks that the algorithm is actually suggesting to buy for the next month, and focusing on the best sectors on a daily basis helps you to get along in this volatile market. So this is the forecast for the next month by the algorithm. सो नेक्स्ट मंथ के फोरकास्ट आज आप देख सकते हैं, जो कि 15th ऑफ जनवरी को अपडेट हुए हैं. सो निफ्टी 150 आईटी कुछ ऐसे सेक्टर्स है जहां पर हमें अच्छे मूव देखने को मिल सकते हैं. और वहीं थोड़ा सा अगर हम बात करें तो फिन निफ्टी वगैरह वाली साइड पर हमें कुछ डाउन साइड मूव आते हुए दिखाई दे सकते हैं. सो एज पर प्रेडिक्शन ऑफ एआई, आने वाला महीना कुछ मुझे इतना ज़्यादा खास पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है. नेगेटिव मार्किंग थोड़ी ज़्यादा ही दिखाई दे रही है. बड़े बड़े सेक्टर्स जो हैं वो कुछ डाउन साइड मूव दिखाना शायद हमें देखने को मिल सकते हैं. इट डिपेंड्स कि अब आने वाला मंथ कैसा होता है मार्केट के लिए. सो फिलहाल के लिए तो ये फोरकास्ट है. देखते हैं अगले वेबिनार तक हमें क्या देखने को मिलता है. ओवर टू यू मैन. Okay, so again, the two special webinar sales that we have for you is the 2025 reports that includes all the top picks for 2025, mid cap, small cap, large cap, best sector, best S&P 500 stocks, the Forex pairs, including the USD in the Indian rupee forecast, recommended the commodities, including the gold, silver, and oil forecast, and of course, the best cryptocurrencies that you need to hold for the entire 2025, the best assets to hold in your portfolio for entire year for $179. And of course, our second webinar sale, the AI daily forecast, 6 time frames, top stocks from the Indian market, if it's large cap, mid cap, small cap, best sectors and indices, and of course, customized AI forecast for your holdings. All that you're getting for $7.99 Indian rupee per month. And I think you shouldn't miss those two sales that we have today, because the product there are really, really quality products. And we highly recommend you getting those two products right now for the beginning of 2025. सो दो स्पेशल सेल आप लोगों के लिए. एक पूरा फोकस 2025 रिपोर्ट, जहां पर आप पूरा मार्केट प्रेडिक्शन देख सकते हैं एआई की, और सभी तरह की कैटेगरीज में, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप में, और सभी टॉपिक्स, ऑल सेक्टर जो भी होंगे वो आप देख पाएंगे. एसएनपी के टॉपिक्स आप देख पाएंगे अगर आप ओवरसीज मार्केट में भी इन्वेस्ट करते हैं तो. साथ ही कमोडिटीज, गोल्ड, सिल्वर, ऑयल फोरकास्ट, और बेस्ट क्रिप्टो करेंसीज भी आप देख सकते हैं. सो ये प्राइस है, स्पेशल प्राइस $179 का. और दूसरा आपका जो आई नो फर्स्ट का सब्सक्रिप्शन है शून्य के साथ, वो आप ले सकते हैं $799 पर मंथ में, प्लस जीएसटी लगेगा. सो जो कॉस्टिंग आपको थोड़ी ज़्यादा दिखाई दे रही है वो इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है. सो $799 पर मंथ, प्लस उसके ऊपर 18% का जीएसटी चार्ज होगा. ये दो स्पेशल ऑफर आपके लिए. Ben, next slide please. सब्सक्रिप्शन, यस, यहाँ पर आपको मिलेगा 6 टाइम फ्रेम में एआई डेली फोरकास्ट, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, तीनों ही कैटेगरीज में
बेस्ट सेक्टर एंड इंडाइसेस हमारे इंडिया के, और एआई पावर्ड फोरकास्ट हमारी होल्डिंग्स के लिए। ये सभी कुछ हम देख पाएंगे 799 पर मंथ पर। ओवर टू यू मैन। Okay, please go over the webinar chat window. We have all the webinar deals available in the webinar chat window, and also the links to our WhatsApp group. You can scan it or use the link that's available in the webinar chat window. सो आप यूज कर सकते हैं इस स्कैन कोड का और ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप ग्रुप को। Ben, can we show that please, scanner of the WhatsApp group? Yes. Please zoom it out so everyone can join this. Yes, that's great. Okay, so ये स्कैन कोड से स्कैन करके आप भी ज्वाइन कर सकते हैं आई नो फर्स्ट का जो ग्रुप है और कम्युनिटी है, और इसमें हम देख सकते हैं कि क्या क्या अपडेट्स होंगी आई नो फर्स्ट से रिलेटेड। सो जो भी मेंबर्स ज्वाइन करना चाहें इस कम्युनिटी को ज्वाइन कर लें। Ben, I think you are on mute. You're right. I think we have a lot of questions to answers from the Q&A. So I think it's a good time to go on some of those questions. What do you say? Yeah, Okay. sure. We can. Right. What is the best signal value or range and predictability range for the best short-term and long-term opportunities, Ben? In the large cap, basically in all the caps, the small caps, mid cap, or large cap, you should always try to focus on the longer time frames where the predictability is the highest. You can see that in the 1 month, 3 months, and 1 year, the predictability is high, higher than the shorter time frame. So we usually suggest to focus on those time frames. And of course, if you're seeing a stock that is in the multiple time frames, it's even better. The signals, values for the predictability in the 3 months, let's say around above 0.558 it's pretty good. And usually 0.5 represent 75 probability that the asset will move to the predicted direction. So try to find the highest values of predictability in each and every time frame. Let's answer the question that was asking if the A. Yeah. Is the AI predictions purely based on technical analysis, or past charts, or based on fundamentals? So, go ahead, Johan. Yeah, basically, this is, I would say, not the next generation of the technical analysis. It's like, let's say it's more like the ChatGPT of the financial market or the stock market. It's a tool that identifying opportunities and using huge amounts of data sets that coming from the entire financial market. So it's not possible to compare it to technical analysis or fundamentals analysis. It's, I would say, the next generation of stock market analysis. I think you answered most of the questions here. Do you see any additional question that you would like to address? I have addressed some of the questions in the webinar only. There are some pricing issue. Some are saying there are some extra charges. That's GST. So most of the questions I have also taken in the webinar only.
So I think if you have any uh, questions which you like to answer, so you can. I think we answered the majority of the questions. As if not, feel free to approach us or the Shoonya platform, and we'll answer your question. Um, and I think it's time to say thank you very much, Keshav, for Yeah, being with us almost 2 hours yeah, no, for interesting that's webinar. So thank you for that. thanks Thank to you, Yaron. all those participants also. Thank you all the participants. Hope you all enjoyed a lot. और आपको काफी कुछ सीखने को मिला होगा, काफी आपको प्रैक्टिकल दिखाए गए कुछ ऐसे प्रोडिक्शंस जो कि एआई ने आपके लिए कुछ मंथ्स पहले या कुछ एक साल पहले 1 ईयर अगो आपको प्रेडिक्ट करके दिया। एंड 147% के रिजल्ट आपको ऐसे स्टॉक्स में और ऐसी मार्केट में एवरेज आपने देखी अराउंड 50% का रिटर्न दिया मार्केट ने, जहां पर बेंचमार्क लगभग 9% के रिटर्न दे रहा है। फिक्स डिपॉजिट को बिट करने में मुश्किल हो रही है मार्केट को, और आई नो फर्स्ट ने आपको 50% से ज्यादा के एवरेज रिटर्न निकाल के दिया। इट्स रियली a great platform. It's really a great technology because अगर हम बात करें तो एक ह्यूमन माइंड कितना ही एनालिसिस कर सकता है, बट जब इसके अंदर कोई मशीन इन्वॉल्व हो जाती है, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्वॉल्व हो जाती है, तो हमारी उस इन्वेस्टमेंट की जर्नी को और ट्रेडिंग की जर्नी को बहुत बेहतर बना सकती है। सो अभी भी सेल लाइव है 799 पर मंथ पर। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं आई नो फर्स्ट को, और यूज कर सकते हैं डेली फोरकास्ट का, और इसका आपको जो बेनिफिट होगा वो आप बिल्कुल देख सकते हैं कि आपकी इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग जर्नी में ये कितना हेल्पफुल होके आता है आपके लिए। Yeah. So thank you, Yaron. Thank you, Ben, for this special webinar and for this special sale for our Shoonya clients, and this 2025 report also. It is very useful for all the traders and investors, majorly for investors who would like to invest in a very well manner. So it's a great initiative from I know first to provide this market insights and this type of technology. Really, it's a wonder for the financial market. It's like a eighth wonder of the world. Yeah. Oh, thank you, Kashan. Thank you very much. Yeah. And in the Q&A, a lot of people are saying thank you to you as well. And Thank you. Ben, you have a lot of warm words in the chat, so go over it afterwards. Yeah, sure. All right. Okay. Thank you very much for the support, and Thank you. thank you very much for your assistance today, as always. It was a pleasure, Thank and you. Happy New Year. Yeah, happy new year to you too. Have a great year for the market ahead. I know maybe market showed some negative marks, but I know first never. It will always Thank be you. positive mark. Yeah, Thank you very much, Kishan. Thank you very most much, welcome. and see you soon. Thank you very much. Sure, sure. Thank you, everyone. Thank you. Bye bye. Bye Bye. bye. Thank you, Ben.